Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I am going to talk about yearly prediction and events in 2021. What will happen with you in 2021, which type of positive events you will face, which type of positivity you will feel, and which type of success you will achieve in 2021. You know, my all predictions are based on your ascendant sign, nothing to do with your moon sign, nothing to do with your sun sign. If you follow my video, if you watch my video, keep ascendant sign in your mind, open your birth chart and check your ascendants, which ascendants you have. Aries ascendants, Taurus ascendants, Gemini ascendants, Cancer ascendants, Leo ascendants, Virgo ascendants, Libra ascendants, Scorpio ascendants, Sagittarius ascendants, Capricorn ascendants, Aquarius ascendants, Pisces ascendants, which ascendants you was born. Follow that ascendant sign and listen my video. You will definitely get 90% streak predictions as per transit. My own predictions are based on transit. I don't know which type of planetary position in your birth chart, but this predictions is overall depend of the transit planet movement like Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, Mars, Venus, Sun, Mercury, Moon, and which type of planetary movement in transit is going to happen in 2021. I will explain you in this video. Let's talk about Leo ascendants. For Leo ascendants year 2021. Guys, this whole year Jupiter-Saturn conjunction is in your 6th house from 1st January 2021 to 6th of April 2021. From 6th April 2021 to 14th September 2021, Jupiter enter in your 7th house in Aquarius sign. From 15th September, Jupiter again transit in your 6th house with conjunction with Saturn till 21st of November 2021. Then again Jupiter enter in the year end from 2021 to end of the December in Aquarius sign. So Leo ascendants in first quarter from 1st January 2021 to 31st of March 2021. During this time from February to March you will be sky high. Your 9th house Lord Mars is in 9th house. Jupiter Saturn conjunction is in your 5th house. You will get a lot of opportunities. Money will come to you from hidden source. You will get unexpected monetary gains. You will get blessed from the stock market. You will earn a lot of money from the stock market. Your old investment will give you fruitful results. This whole quarter will give you a lot of opportunities, fame, respect, honor, regards. You will enjoy a lot of comforts. Blessings of your father, blessings of your parents will make your life easy and better. You will get something inheritance from your father's side. This first quarter will give you a lot of financial gains, opportunities, and your old pending work will click. You will enjoy a lot of financial tie-ups. You will enjoy a lot of new partnerships. You will enjoy a lot of cash in hand. And your bank balance will rise and you will enjoy a lot of luxury. There is a strong chances some long distance journeys will make you happy. Because Jupiter 7th aspect Saturn and Jupiter 7th aspect is in your 12th house. But you need to be careful about spending money. Because some overspending will unbalancing your savings. Leo, this first quarter in 2021, you will be sky high and top because 9th Lord is in 9th house, will give you lot of good fortune, started smile for you. You may go for some religious activities, you may go for some charity. This first quarter will give you lot of clearance about your scenario, what will happen with you in 2021, 2nd, 3rd and 4th quarters. First quarter is one of the biggest game changer time for you, especially February and March from 6th Feb to 31st of March 2021. Leo, you will be sky high and top. You will enjoy a lot of comforts. If you are shopkeeper, if you are manufacturer, if you are teacher, lecturer, if you are any type of government related employee or any type of businessman, you will get blessed with a lot of monetary gains. This first quarter will bring a lot of happiness for you. You will be on sky high and top. You will enjoy a lot of comforts. Your savings will rise and you are able to save a lot of money. Your source of earning will develop and you will enjoy a very comforts moment, very good quality time with your family and friend. This first quarter from 6th Feb to March end, you will be sky high and top. If you want to start something new, then this is the ultimate time when your good fortune is in your favor. Some long distance, sudden journeys are seen as per transit. If you have a Mars Mahadasha, Sun Mahadasha or Jupiter Mahadasha, if you want to interested for PR or work permit in foreign land, your plans will be executed, you will get PR, you will get work permit in first quarter. Leo ascendants,
1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप स्काई हाई रहेंगे। फरवरी 6 से लेकर मार्च एंड तक आपके 9th हाउस का लॉर्ड मार्स आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज आप करेंगे। इस समय आपको आपके पिता से कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। गुरु शनि की युति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में 1 जनवरी 2021 से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक है। उसके बाद जुपिटर मूव करके आपके 7th हाउस में जाएंगे 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक। 15 सितंबर 2021 से जुपिटर फिर री एंटर करेंगे कैप्रिकॉर्न में, कंजक्शन होगा सैटर्न के साथ 21 नवंबर 2021 तक। 21 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जुपिटर फिर एक्वेरियस में होंगे। गाइस, ये सारा साल खास करके पहला क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके लिए गजब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप स्काई हाई होंगे, कैश फ्लो आपको हैप्पी करेगा, आपकी सेविंग्स में राइज होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट कर सकते हैं क्योंकि गुरु शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस में है। पहले क्वार्टर में अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आपके सामने आएंगी। आपके ऊपर होगा कि आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कौन सी नहीं। अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है या बृहस्पति की दशा है तो पहला क्वार्टर आपके लिए एक्सीलेंट होगा। व्हेन यू विल बी स्काई हाई एंड यू विल बी टॉप। आप ऊंचाइयों पे रहेंगे, बुलंदियों पे रहेंगे और हर एक तरह की सक्सेस आपके कदम चूमेगी। लियो, जितना ज्यादा अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज्यादा फादर को रिस्पेक्ट और ऑनर देंगे, जितना ज्यादा फादर के फीट टच करेंगे, उनके पांव छुएंगे, उतना ज्यादा गुड फॉर्चून आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर में काम करेगा। पहला क्वार्टर आपके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आ रहा है। यू मे गो फॉर सम हॉलीडेज विद योर फैमिली और फ्रेंड्स इन फर्स्ट क्वार्टर। यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फर्स्ट क्वार्टर। लियो, 2021 is your year if you plan your year, if you design your year। आपके बर्थ चार्ट में कौन से प्लैनेट की महादशा है आपको ये जानना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करें। फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत सारी गजब की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है जिसमें आपको रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं, आपके रुके हुए काम क्लिक हो सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चर हैं या रियल एस्टेट ओनर हैं या स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले क्वार्टर में अनएक्सपेक्टेड मनी आपको हैप्पी करेगी। You will enjoy a lot of comforts. You will enjoy a lot of unexpected gains from stock market or real estate. अगर कोई आपकी डील रुकी पड़ी है, पिछले 6-8 महीनों से क्लिक नहीं हो रही है तो फर्स्ट क्वार्टर स्पेशली 6 Feb 2021 टू एंड ऑफ द मार्च 2021 में आपकी कोई भी पुरानी डील क्लिक होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे और आपकी लाइफ जो होगी फार बेटर एक ट्रैक पे चलेगी। Some unexpected money will make you happy. You will be sky high and top. Your old dreams and desires will be fulfilled in first quarter. Leo, you need to focus on your things. You need to pay your taxes and bills on time because Jupiter Saturn in Dharma Karma Adhapati Yoga in your 6th house. Don't ignore your installments, don't ignore your taxes related to government activity. किसी किस्म की कोई इंस्टॉलमेंट, किसी किस्म का कोई अपना टैक्स जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उसको इग्नोर ना करें, अदरवाइज आप किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। लियो, किसी भी चीज़ में इग्नोरेंस ना दिखाना इस साल की आपकी सक्सेस की होगी। आपकी पिता की ब्लेसिंग्स लेना इस साल में आपकी सक्सेस की होगी। जितना ज़्यादा आप पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे, जितना ज़्यादा पिता के साथ सिटिंग करेंगे, अपनी चीज़ों को अपने फादर से शेयर करेंगे, उनकी ग्रीन सिग्नल लेंगे अपने हर एक बड़े इवेंट्स करने से पहले, यू विल बी स्काई हाई। लियो, ये सारा साल आपके लिए ढेर सारी उपलब्धियां, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप नेवी या आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपकी प्रमोशन फर्स्ट क्वार्टर में हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, चेंज ऑफ प्लेस मुझे बनती हुई दिखती है आपकी फर्स्ट क्वार्टर में। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर बहुत ही रिवार्डिंग है। 9th हाउस में मार्स ऑन साइन में फरवरी से मार्च एंड तक जुपिटर सैटर्न इज 6th हाउस, आस्पेक्टिंग इज ऑन योर 12th हाउस। यू विल डेफिनेटली गेट पीआर और यू विल डेफिनेटली गेट वर्क परमिट इफ यू आर विलिंग टू सेटल इन फॉरेन लैंड। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इन फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम 1 January 2021 to 31 March 2021 your old dreams and desires will be fulfilled related to settlement in foreign land. Because Mars is in your 9th house, your 9th lord is in 9th house and 4th aspect is on your 12th house, and Jupiter Saturn 7th aspect is in your 12th house.
So there is a strong chances to partnership in far away place from your birthland. If you are in Canada, you may start your work in India. If you are in India, you may start your work in Canada or America. Because Mars 4th aspect is in your 12th house from 9th house, and Jupiter Saturn 7th aspect is in your 12th house in first quarter. Leo, this first quarter will give you a lot of energy, lot of positivity, lot of good gains. You will feel blessed, you will enjoy a lot of comforts, your savings will rise and your whole work will click. Unexpected positive events will happen with you, which you never expected. Leo, you need to take blessings from your father's side. Don't ignore any installment, don't ignore any bills, or don't ignore any government taxes. If you ignore all these things, you must be a part of any litigation. लियो, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वार्टर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक। जो सेकंड क्वार्टर है लियो आपका, ये क्वार्टर आपके लिए जुपिटर 6 अप्रैल को 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आपके 11th, 1st और 3rd हाउस को देखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बड़ा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, नई पार्टनरशिप ऑफर्स आएंगी और आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप कंफर्म है सेकंड क्वार्टर में। बिजनेस को लेकर ये टाइम बड़ा ही ज्यादा रिवॉर्ड्स लेकर आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। लियो, सेकंड क्वार्टर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2021 you will be sky high and top in Jupiter transit in your 7th house in Aquarius sign, and aspecting is on your 11th, 1st and 3rd house. You will have a great confidence level, great courage. You have a very good relationship with your siblings. Some unexpected monetary gains will make you happy. There is a strong chances to start a new business venture with one of your partner, one of your near and dear. And that business will give you a lot of money, lot of good gains. And you will feel blessed. You will feel very positive energy because Jupiter 7th aspect is on your 1st house. Mars is in your 10th house. You will shine in at your workplace. You will enjoy a lot of comforts. You will got some order. If you are importer exporter, you may got some order from foreign land. You may sign any new contract or any new deal which will make you happy. Your health will be fine and you will enjoy all comforts. Second quarter will give you immense amount of money. You will have lot of savings. Your expenditures is down and your savings will be upgraded. Second quarter will make your life easy and better. Blessings of your father will make your way easy. You will be sky high and top. If you are applying for the government job, you may get government job in the second quarter. If you are applying for the any type of construction related, any type of loan or any type of government related activity which is linked with loan, your loan will be granted. Leo, second quarter from 1st April 2021 to 30th June 2021, you will be sky high, you will be top, you will get recognition at your workplace, your seniors will be satisfied from your performance, you will enjoy a lot of positive events. Leo, Mars transit in your 10th house, you will feel very positive energy in the month of April. Your old dreams and desires will be fulfilled related to your workplace. Leo, second quarter में Mars April month में आपके 10th house में होंगे, आपके लिए बहुत ही कंफर्ट फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशंस आप मिलेगी या बहुत ही ज़्यादा आपको एप्रिशिएशन मिलेगी आपके सीनियर से आपकी जॉब में। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी किस्म के कोई एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, तो फॉरेन से कोई नई डील आपको मिल सकती है, फॉरेन से कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा, हेल्थ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, सिबलिंग्स के साथ टाई अप आपके एक्सीलेंट रहेंगे। लियो, सेकंड क्वार्टर में आपके फादर की ब्लेसिंग्स आप जितनी ज़्यादा लेते रहेंगे उतना ज़्यादा राइज करते जाएंगे। अपने फादर का एक्टिव हिस्सा अपने बिजनेस में रखें अपने साथ। अपने फादर को बोला करें कि आपके ऑफिस में आके आधा घंटा आपकी मेन सीट पे बैठा करें। You will be see big miracles in your life. Leo, second quarter will make your life easy and better. You will enjoy a lot of blessings from your father's side. You will enjoy a lot of money. You will enjoy a lot of savings. Your health will be fine. You will enjoy a lot of quality time with your family and friends. You may invest your money in real estate or stock market, and your investment will give you fruitful result in near future. Leo, second quarter, your workplace will be shining and you will be sky high. Your old desires will be fulfilled related to your work. If you are willing to apply for government job, then this is the right time. April month will be a biggest game changer for you. You may invest your more money in your business and you will see big growth in your professional life. Leo, this is the time when your good fortune started smile for you and your mud will turn in gold. Now I'm going to talk about third quarter of Leo, which is going to start from the 1st July to 30th
September 2021. Jupiter is in your Aquarius sign till 1st July 2021 to 14 September 2021. Placement of the dynamics is very wonderful. Leo, the more you put your efforts at your workplace, the more you get success. Your hard work converts in sweet success. If you are any type of IPS officer, if you are any type of government employee, if you are any type of navy merchant, if you are any type of captain or driver of any ship, you will get blessed with a lot of promotion, lot of money. Leo, third quarter, you need to be careful while investing your money in real estate. This is not a right time. Leo, you need to be careful while talking with your elders. It's not a right time. You need to be careful while start any new business venture in third quarter, especially 1st July to 30th September. It's not very productive time because Jupiter Saturn is retrograde. Jupiter is retrograde in Aquarius sign, Saturn is retrograde in Capricorn in your 6th house. You need to be careful about your health. Leo, थर्ड क्वार्टर में गुरु शनि वक्र अवस्था में होंगे, जिस वजह से आप कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी हेल्थ को लेकर सावधानी से चलें, डीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ सोच समझ के करें, किसी को कोई फॉल्स कमिटमेंट ना करें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स देते रहें, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। थर्ड क्वार्टर आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। थर्ड क्वार्टर ईयर 2021 का 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आपके लिए कुछ हर्डल्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ चैलेंज लेकर आएगा। बट यू हैव अबिलिटी टू अचीव ऑल दिस चैलेंज। आप बड़े इजीली इन चैलेंजेस को आप अचीव कर लेंगे, एबल रहेंगे, इस लायक रहेंगे कि आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकें। लियो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे, जितनी ज़्यादा अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहेंगे, जितना ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे, जितनी ज़्यादा स्किल्स आपकी लोगों के सामने आएंगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। लेकिन थर्ड क्वार्टर में कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना दें, वरना आपका पैसा वापस नहीं होगा। मैं बार बार बोलूँगा, इस सारा साल में आपके पिता की ब्लेसिंग्स आपके लिए मार्गदर्शन साबित होगी। जितना ज़्यादा पिता की इज्जत करेंगे, जितना ज़्यादा पिता को ब्लेसिंग्स देंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे। Now I'm going to talk about fourth quarter, which is going to start from the 1st October 2021 to 31st of December 2021. This is the biggest change, biggest promising positive change for you, Leo. You will see a lot of earning, source of earning. You will enjoy multiple source of earning from your profession. If you are in job, you may start side by side any new business. If you are already working in business, you may start any new company. Some foreign journeys will make you happy. You will get some lot of good money or lot of good source of earning related to foreign. Leo, fourth quarter will be ultimate for you, especially in the terms of start any new business venture or invest your money in stock market or real estate, or you may buy any new vehicle in the fourth quarter of 2021. Blessings of your father will make your way easy, but you need to be careful about health of your father. And don't ignore any type of negative things which is linked with your father. Special for your health of your father will be a matter of concern in fourth quarter. You need to focus on your father health. Leo, fourth quarter will make your always easy. You will be sky high and top. You will get recognized. If you are in job, your seniors will be satisfied from your performance and you may get promoted, and there is a strong chances to change your place. If you are in student, then whole year 2021 you are not focusing on your education. You're feeling very down and low. You need to focus on your education, Leo, because this is not very productive year for students. Especially first quarter, second and fourth quarter is very struggling and challenging for students. In fourth quarter, Leo, your spouse will help you. Your spouse blessings, your spouse love will make your way easy. If you are unmarried, you may get companion. If you are in love relationship, your love relationship will convert in marriage life. Leo, this whole year will give you some small challenges in third quarter of the year. Otherwise, you will be sky high and top, and you will enjoy a lot of comforts, money, success, name, fame, and you will enjoy a lot of savings. Your old debts will be clear, and if you wanna take any new loan from government side, your loan will be granted. Leo, this is a time when your good fortune shine and you will be sky high and top. Especially first quarter and fourth quarter will be ultimate for you. Leo, I suggest you one mantra. The mantra is Om Sa Suryaya Namah, Om Sa Suryaya Namah, Om Sa Suryaya Namah. Read this mantra 108 times, 121 times, 151 times, 251 times.
More you do it, more you achieve it. This mantra will create some positive energy in your tough days in 2021. Offering water to sun. Stand in front of sun before start your day with folding hands and down head. You will surely see big miracles in your life. These small remedies will make your year easy and better. Blessings of your father will be one of the key of success in 2021, Leo. Understanding with parents, blessings of your father will make your way easy. You will enjoy a lot of success. Happy New Year 2021, and I hope and I wish you will be sky high, and I'm looking forward to your great success and achievements in 2021. Thank you for watching my video. Namaskar, Om Namah Shivaya, Jai Hind.